इसी प्रकार से हमने इजी लिविंग में भी बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। उसी को आगे रखते हुए हम इस प्रकार से आज ये बिल लेकर के आए हैं। माननीय हमारे कानून मंत्री जी जो बिल आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि ये बिल उन 229 राज्य अधिनियमों को निरस्त करने के लिए जो राज्य को भेजा गया था, संबंधित राज्य सरकार ने अब तक 79 उसमें से निरस्त कर दिए गए हैं। और आज ये 65 कानून जो अधिनियम को निरसित करने के लिए आज ये कानून पुनर्स्थापित किया गया है। इसमें 11 कानून और जोड़े गए हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व के थे, जिनके कारण आम आदमी को बहुत असुविधा होती थी। आदमी के मतलब के वो कोई कानून थे नहीं, केवल कानून की किताबों में वो बोझ के रूप में पड़े हुए थे। आम आदमी को उससे परेशानी होती थी। हमारे जजेज भी उसके दबाव में रहते थे, हमारे वकील भी उसके दबाव में रहते थे, और जनता को किसी प्रकार की उससे सुविधा नहीं थी। जनता के लिए भी वो एक प्रकार से हर्डल थे। लोकसभा में 27/7/2023 को इसके लिए 76 अधिनियमों के लिए जो बिल लाया गया था, और वहां पर वो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन इसके लिए जानी जाती है। हर क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और हर आदमी को सुविधाजनक रूप से देश के नागरिक के रूप में, कर्तव्यवान नागरिक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले। इसके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमने इसी प्रकार से देखा देश के अंदर विदेशों से फंडिंग वाले, बैठ जाऊं सर? नहीं, कंक्लूड करो, बैठो सर। देखा कि यू आर वेरी गुड पॉइंट्स, मैं कर रहा हूं सर, तो कंक्लूड करो। हमने देखा कि विदेशों से फंडिंग वाले ऐसे अनेक एनजीओ थे जो देश को तोड़ने वाले साथ रहते थे। ऐसे लगभग 20,000 एनजीओ निरस्त किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के काम होते थे, काले धन को सफेद करने का काम होता था, उनको निरस्त किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार करने का काम हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और अभी पिछले ही हमने देखा कैसे अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट उनको निरस्त करके अपने नागरिकों के स्वाभिमान के अनुसार नया कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार से सभी जो पर इस प्रकार के भार या अनुपयोगी कानून थे, या जिस क्षेत्र में भी अनुपयोगिता है, उसको समाप्त करके हम देश को अगले 25 वर्षों में संकल्पबद्ध हैं। प्रकार के सारे सुधारात्मक कदम उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। श्री पी विल्सन, 5 minutes, sir. Sir, this bill amends and introduces section in Telangana with the budgetary provisions of 889.07 crores for 7 years in 2 phases. Thank you, Chairman, sir. I will talk on this. Sir, so far as this repealing bills are concerned, sir, it is better to have a sunset clause in all the bills. Whenever you introduce a bill, you should have a sunset clause so that once the bill is introduced and act is passed, that sunset clause by itself, the bill becomes defunct and
it amounts to a repeal. So this sunset clause has to be introduced so that we can avoid this much of valuable time in future for having a separate repeal bills. I understand whenever you bring in an amendment by way of an act, that amendment act will be there and it can be repealed only by a repeal act. So when you introduce this type of sunset clause in the bill, that will help us to save much time of this house and we can debate on the people's issue, number one. Sir, so far as number two is concerned, sir, whenever you bring an act, why don't you consult the stakeholders? I have seen, sir, I have been in the Committee of Law and Justice. Sir, the judiciary is taking the strain of hearing or because of the act which is being brought. So why don't you have a judicial impact assessment being done whenever a bill is introduced into the House? Before a bill is introduced into House, why don't you have a consultation with the stakeholders, consultation with the judiciary, consultation with the advocates, consultation with the person who's going to be affected by the bill? So, for example, I would say Negotiable Instrument Act, when you brought an amendment, Section 138 of Negotiable Instrument Act, it had a docket explosion. All of a sudden, lakhs of cases overnight, the courts have to hear. So there was not much of infrastructure. And our honorable chairman, I would say with pride, he belongs to our community, namely from legal fraternity. The chairman knows that if you introduce a bill and when it becomes an act, how far it is going to have an impact on the judiciary, on the litigants. So this study can be done before a bill is being introduced so that it will not be a surprise for all of them. If you want to bring an act which is going to affect a trade community, or it is going to affect lawyers or other set of peoples, so why don't you have a hearing and tell them, and so you can also interact with them and they will also be suggestion. No, why I'm saying is there are a lot of amendments being brought. Sir, I will say today, take Arbitration Act, sir. Sir, under Section 34, if you want to set aside an award, the court which is hearing a matter against an award passed by an arbitrator, it has no power to modify a decree. It has to only set aside and send back again to the arbitrator. Sir, arbitrators are taking about years together. Imagine an arbitration goes on for about 5 years. And when the matter comes to the court and the court hears the matter, and after another 5 years, if the court is not empowered to modify award and make it as a decree, and the power is only to the extent of sending it back to the arbitrator, sir, these types of powers, sir, has to be regulated by way of having a discussion with the stakeholders whenever before it is being introduced before the parliament. So that is what, sir, I would say, that these repealing acts are unnecessary. You can stop it by introducing a sunset clause at the beginning itself. So that would be my suggestion, sir, so that we can avoid, the wastage of time of this house. And if this sunset clause, this has been followed in the foreign countries, I could say. So this can be adopted and we could save time. We can concentrate much on the people's issues and the other issues can be taken into consideration. Number one. Sir, another important issue, sir, which I've been telling you is, sir, the social diversity is not there in the judiciary, sir. When you take the representation of the number of judges in the High Court or the representation in the Supreme Court, sir, the social diversity is lacking in the High Court and it is also lacking in the Supreme Court, sir. Please see, sir, the information given to the Parliament by the Ministry of Law and Justice. If you see from 2018 to 2023, sir, I am told that about 80% are from the upper caste. I would say from the one community. I don't want to name the community. And the rest of 20%, sir, are coming from the backward class and from the scheduled caste and scheduled tribe. And if you see the Supreme Court, sir, is still worse.
So we had, in fact, sir, we had even brought a You have report. made your point, sir. Very, very emphatically, you have made your point. Yes. So I would only ask I'm grateful to the chairman. And this representation, why don't you consider, sir? Sir, what is wrong with a backward class person coming as a judge? And do you think that he can't deliver judgment? Sir, I can see two things, sir. Whether the collegium has failed to identify a person with whose merit from other classes, or whether the collegium is not interested in identifying a meritorious persons from the other You classes. have made your point, sir. So therefore, high time, Chairman, sir, that let this be considered. And thank you very much for allowing me to speak on this bill. Before I call upon the Honorable Minister to reply the discussion, lawmaking is a very serious business. We alone are entrusted with lawmaking. And there are two different categories. If Parliament, which is the ultimate architect of the Constitution, makes some change in the Constitution, that is final. There can be no intervention from any agency, be it executive or judiciary. But if there is a legislation, judiciary has a method of intervention by way of judicial review, because every legislation has to be in accordance with constitutional prescriptions. So things are very categorical. To the extent a constitutional provision is concerned, any intervention, Honorable Minister, any intervention with respect to constitutional provision emanating from Parliament is not acceptable. Parliament is the only reflector of the opinion of the people. This is by way of a structured platform. People of this country indicate their mindset through the ballot and send their representatives here. I'll just tell you, we must be quite serious about it. I'll just read one provision of the 10th schedule of Indian Constitution, and that will surprise all of you. And that is 10th schedule, clause 6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection. But if you go to proviso, provided that where a question has arisen as to whether the chairman or the speaker of a house becomes subject to disqualification, the question shall be referred for decision of such member of the house as the house may elect in this behalf, and his decision shall be final. Now just reflect, where is the question of disqualification of chairman Rajya Sabha? So we have to be extremely careful. This was drafted at a time, it was just before we came to power in 1989. So it's a serious business. I will urge all of you that we are the ultimate custodians of the rights of the people, sovereignty of the people, by ensuring that we act diligently, vigilantly, with thorough preparation, make appropriate inputs, and do not permit any incursion whatsoever. What is our mandate? And that is ultimate authority to ensure constitutional compliance and be the architect of Constitution. Any intervention in this area should be repelled. There was an occasion where we discussed an important bill. I was looking right, left, and center that someone would reflect. Can the highest court of the land make an interim legal arrangement? That is 100% mandate of this house. I am sure
we will engage more seriously when it comes to lawmaking. Honorable Minister, Sri Arjun Ram Meghwal, to reply the discussion. These reflections were because the Honorable Minister is handling the Department of Law and Justice. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल जिस पे आज ये महान सदन चर्चा कर रहा है, इस बिंदु पर या इस बिल पर 8 लोगों ने अपने विचार रखे। जीवीएल नरसिंह राव जी से लेकर के और पी विल्सन तक सबने विचार रखे। इसमें हमारे तंबी दुराई जी ने भी विचार रखे और महेश जेठमलानी जी भी, नरेश बंसल जी, के.आर. सुरेश रेड्डी जी, मस्ताना राव बीडा जी, मुजीबुल्लाह खान, सबने अपने विचार रखे, सबने अपने सुझाव भी दिए और सबने ये माना कि जो कानून जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है उनको समाप्त कर देना चाहिए। सबने इनका बिल का समर्थन भी किया। सभापति जी, ये एक विषय है जो जनरल एक परसेप्शन भी है, एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि मनुष्य की प्राकृतिक मौत हो सकती है। मनुष्य उसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसे एज आई 100 साल, 80 साल, 70 साल, तो एक प्राकृतिक मौत हो सकती है। लेकिन को अधिनियम है, उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती। उसको अगर किल करना है तो संसद में ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार आकर के यहाँ किल करने का प्रयास कर, क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना ऐसे बिलों की, लेकिन बार बार आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा एक साथ आ जाओ, बार बार मत आओ। कुछ लोगों ने सनसेट क्लॉज जैसे सुझाव भी दिए, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया ऐसी है, ये नेचुरल डेथ का विषय नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास है, कुछ राज्यों की विधानसभाओं से पास है, वो संसद में आना ही पड़ेगा। देखिए, हर बिल में एक एक्ट का नंबर होता है। हर बिल में एक्ट का ईयर भी होता है। कौन सा लेजिस्लेचर लेके आया, किस विधानसभा ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, इसका उल्लेख भी होता है। और जिसका पुरुषोत्तम जी रूपाला साहब बार बार जिक्र करते हैं, वो इनेक्टिंग फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी, और रिपब्लिकन ईयर भी उसका होता है। तो ये सारी चीजें होने से हम सबको एक साथ लेके आ जाएं, ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। सनसेट क्लॉज के बारे में आपने जिक्र किया, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिल था ओरिजिनली, इसमें 65 ऐसे अधिनियम थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा ये 11 ऐड हुए हैं, तो टोटल 76 ऐसे कानून जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी 2014 में शासन में आए, मोदी जी के आने के बाद 1486 हम पहले ही ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको समाप्त कर चुके हैं। 76 ये जो आज महान सदन इसको पास करेगा, तो टोटल 1562 ऐसे कानून जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रिंसिपल था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और इससे नागरिकों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का भी मार्ग जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे बिल थे जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था आपके आने से पहले, कि जैसे कुछ ऐसे बिल थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और नागरिकों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं। जैसे पहले मैंने टेलीग्राम वायर का जिक्र किया कि कोई रख नहीं सकता। अब टेलीग्राम वायर नाम की जैसी कोई विषय है बचा ही नहीं, अनलॉफुल एक्टिविटी बची नहीं है। ऐसे ही एक शुगर कैन का विषय था कि शुगर कैन को हम असेंशियल कमोडिटी जैसा मानेंगे,
अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, उसमें चीजें डिफाइन होगी, शुगर केन का उसमें विषय नहीं रहा। तो ऐसे अननेसेसरी के एक्ट थे, लेकिन इस पे सोचा नहीं किसी ने। हम अगर यूपीए कालखंड की बात करें 2004 और 14 में साहब ऐसा एक्ट जिसकी प्रचलन में किसी आवश्यकता नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ। और मोदी जी के आने के बाद 1562 ऐसे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से कर रहे हैं। जैसे मेटल कॉर्पोरेशन है, अब मेटल को एक्वायर करना अपराध, कोई मेटल कॉर्पोरेशन का एक इसमें मैं लेके आया हूं। तो अब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र अलग अलग सदस्यों ने किया है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का काम होता है, कुछ एक्ट स्टेट के होते हैं, कहीं पर स्टेट्स की ओपिनियन भी ली जाती है, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन ये भी एक काम था, मोदी जी से पहले इस पे तेजी से विचार नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद लगा कि भाई ऐसा ये भी एक काम है, अननेसेसरी के एक्ट क्यों पड़े हुए हैं। इसलिए मैं जो कई बार कहता हूं कि जो पंच प्रण है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लाल किले की प्राचीर से भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित, ईज ऑफ लिविंग, यहां भी एक विषय आता है। गुलामी का कोई भी अंश हो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कानून जो गुलामी के पीरियड के बने हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिल रही है, वो भी पंच प्रण के माध्यम से हमें उसमें जो है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का विषय है, उस दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सनसेट क्लॉज के बारे में जो पी विल्सन साहब कह के गए, मैं ये कह सकता हूं कि सनसेट क्लॉज इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सनसेट इज बीइंग कंसिडर्ड एंड कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। आगे उस पर क्या विषय आएगा हम आपको बता देंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, इसलिए हम ऐसे एक्ट जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ठहरे पानी की तरह हो गए हैं, उन्हें रिपील करने का काम आज इस बिल के माध्यम से मान सदन के समक्ष मैं लेकर के आया हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी थक जाता है, वह तो अपनी काई से, काई उसके ऊपर ही होती है, लेकिन एकदम ठहर गया पानी तो वो काई से भी थक जाता है। तो ये ऐसे कुछ कानून थे जो खुद भी थक रहे थे, नागरिकों को भी थका रहे थे। कुछ विषय जुडिशरी से संबंधित भी आए, कुछ टिप्पणी आपने भी की, और कुछ जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के कि सभी सामाजिक। माननीय मंत्री जी, we all are proud of our institutions. There are three main organs: जी, the legislature, the executive, the judiciary. जी, The executive has performed phenomenally. The world has recognized it. We noticed it during G20. We have seen infrastructure growth of unbelievable dimension. Elevation of poverty has taken place. So executive is performing very well. These are not political issues, they are above politics. Our judiciary has a robust infrastructure, known for its independence globally. Our judiciary recently has taken several innovative steps. Even I have directed our secretariat to get in touch with the Supreme Court Secretariat about translation. Our judiciary has attained milestones by making available judgments in the language people understand. Many things have happened. There will always be issue between organizations because we are in a dynamic world. Those issues have to be settled. Some issues may arise from this side, some issues may arise from executive, some issues may arise from judiciary. And therefore, this parliament, this august house, the upper house, is committed to giving highest respect to all the organs, because only in togetherness, in tandem, we can achieve success of our democracy to a higher level
and take it to 2047 as a developed nation of the world. Therefore, the intent is that if there are difference of opinions, that is just a perception which can be smoothly ironed out. And I have no doubt with a minister like him who has seen the executive, he has operated legislature also by virtue of being district magistrate. You have dual powers. So he is eminently suited and belongs to a category of Dr. Ambedkar. So he is the right person, a right platform to smoothen out if there are any rough edges. But we take pride in all our institutions. It is this house that has done justice to one half of humanity by providing for reservation to women. It is this house that did away with the temporary provision of Article 370. Historic epochal events have taken place. So it is from that perspective, the honorable member made some reflections. We have to see it in that perspective. Honorable Minister. सर, आपके जो ऑब्जर्वेशन थे, आने वाले समय में जब कभी भी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कंसल्टेशन के प्रोसेस में, आपके जो वैल्यूएबल सुझाव हैं उनको हम उचित प्लेटफॉर्म पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व सब वर्गों का जुडिशरी में होना चाहिए। ये आज के इस ऑब्जर्वेशन का मैं सार समझ पा रहा हूं। देखिए, जो भाषा का विषय आपने रखा, एक फंक्शन में राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हम सब लोग थे, उस समय ये भाषा का विषय आया कि ऐसी भाषा में आपके जजमेंट होने चाहिए। आप भी तो जनता के लिए हो ना, सब हम जनता के, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला वर्ड वही लिखा हुआ है। तीनों अंगों के लिए भी वही सुझाव है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो सरल भाषा में होगा, सब लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है जुडिशरी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है और इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। एक ई कोर्ट के लिए भी अच्छा काम हुआ है। अगर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब, अगर उनके सेक्रेटरी जनरल, उनका भी पद नाम सेक्रेटरी जनरल हो गया है, हाँ, तो उसमें आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी सुविधा रहेगी। दूसरा एक विषय और, आपने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब का चित्र नहीं था, मतलब प्रतिमा नहीं थी। तो वो अगर 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का फंक्शन कहीं मनाते थे तो चित्र फोटो रख करके मनाते थे। अब पहली बार जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने 1923 में अपनी वकालत शुरू की थी, उनके वकालत के 100 साल पूरे होने पर वकालत की ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में उनकी प्रतिमा लग गई। ये भी बहुत बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे सकते हैं आपके माध्यम से। मैं समझता हूं कि चर्चा काफी ठीक हो रही है। तो ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में चर्चा हुई है, उसको पास करने का मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मति से। थैंक यू। The question is that the repealing and amending bill 2023 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 4 are adopted. First schedule and second schedule and third schedule, eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. First schedule, second schedule and third schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title eastern part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Arjun Ram Meghwal to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I move that the bill as passed by Lok Sabha be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is
that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. Honorable members, I had indicated to the House that I'll come back to the House with respect to an update on the incident. The culprits have been apprehended. The matter is under investigation and it will take its own course. Honorable members, I wish to seek sense of the House. We have special mentions. Some of the members have chosen not to be present in the House. बात कुछ भी होती है पर कारण कुछ भी हो, इस कुर्सी पर बैठने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है. जो नहीं है उनके अधिकारों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है. ये मैं उनके विवेक पर सोचता हूं कि उन्होंने अपना उत्तरदायित्व कितना निभाया, किस तरीके से निभाया. I think sense of the House is that we take it on the next day. Because reading a special mention is not ritualistic. Every member is benefited by listening to it. Every member gets enlightened thereof. This is an exercise too serious and we must take it as such. Do I have leave of the House? So the special mentions will be taken up in due course. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 14th December 2023.
Act. A bill passed by both houses of Parliament and assented to by the President. Adjournment of the sitting of the House. Termination of the sitting of the House, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha.
हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, जीत गया था, जीत गया। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। साल 1976 में
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाए गए मौलिक कर्तव्यों का मूल उद्देश्य नागरिकों को संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित करने और आदर्श विचारों को बढ़ावा देने का है। आइए आपको बताते हैं संविधान में वर्णित 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रखना। सरकार की संपत्ति जैसे कि ऐसे भवन या संपत्तियां जिनका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता हो, तेल संबंधी प्रतिष्ठान, खान या कारखाना, सीवेज संबंधी कार्यस्थल, लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति सभी सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 भी बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना और अपनी डिमांड को सरकार के सामने रखना, लेकिन उसको हम पीसफुल वे में रख सकते हैं, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके। और अगर कोई अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है तो उसकी रिकवरी के लिए, उसको सजा देने के लिए कानून में 1984 में पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसमें प्रावधान रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिसमें मिनिमम सजा का 6 महीने का प्रावधान है। अक्सर देखा जाता है कि विरोध के नाम पर सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया जाता है और उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि मूल कर्तव्य में कहा गया है कि हमें हर हाल में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति यथा बस, इमारत आदि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे रोकना चाहिए। सरकारों ने कुछ अपनी तरफ से कदम लिए, जैसे कि यूपी में किया गया, डिफेम करने की बात की गई, डिफेम डी नेम की बात की गई। आई थिंक ये एक अच्छा प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए 2019 में एक जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसी को भी आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एंगर एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, आप हड़ताल कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो आपको लायबिलिटी होगी कि आप उसके लिए क्षतिपूर्ति करें। महात्मा गांधी के शब्दों में मौलिक अधिकार वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को अत्यंत समर्पण और सच्ची ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि कर्तव्य और अधिकार आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। अधिकार व्यक्ति को कर्तव्य के शर्त पर ही मिल सकते हैं। महात्मा गांधी की इस बात को प्रधानमंत्री भी दोहरा चुके हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत काल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में यह बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है।
भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है।